So students, before starting your work, you have to recite Tawaf Tasmiya, A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem, Bismillahirrahmanirrahim. हमें हर काम शुरू करने से पहले अल्लाह का नाम लेना चाहिए ताकि उस काम में बरकत हो, हमारा काम परफेक्ट हो. So this is your English A copy. I'm your teacher from Metropolitan Foundation School. Take out your English copy and prepare your stationery. So students, open your English A copy. What we did on last video. In last video we make a title page and month of August, and then we make the Hungry Mouse title page. Then we did a work of it. Dictation words: hungry, basket, cloth, whole, thick. And words meaning: hungry, feeling the need for food. Looks, using your eyes. Find, discover. And we did word sentences. Basket, I like flower basket. Hungry, I am hungry. Thick, a telephone pole is thick. We did all of this in last video, last English video. So now we have to continue this work of this lesson. Today we are doing question answers from this lesson. Open new page. This is your new page. Write down the date here. What is the date today? Write here. Then write down the heading on the heading line. Question answers. Questions, answers. This is a short form of question answers. So, question number 1. Question number 1. Write down the CW in the same page. Question number 1 is what? What is Mr. Mouse looking for? Looking for. Why? Question mark. जब भी हम कोई क्वेश्चन राइट करते हैं, लाइक व्हाट इज योर नेम, तो उसके अगर हम लिख रहे हैं, राइट कर रहे हैं क्वेश्चन, व्हाट इज योर नेम, तो जो क्वेश्चन होता है उसमें ये सिंबल जरूर मेंशन होता है. हम ड्रॉ करते हैं क्वेश्चन मार्क. ये है क्वेश्चन मार्क. इसको हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन मार्क. एवरी क्वेश्चन वी in the last of every question we have to put this mark because this means कि हमने क्वेश्चन राइट किया है. इसी तरह व्हाट इज मिस्टर माउस लुकिंग फॉर एंड व्हाई. मिस्टर माउस क्या देख रहे थे और क्यों देख रहे थे. हमने ये लेसन में पढ़ा था और इसको मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी किया था और आपको समझाया था कि मिस्टर माउस बहुत ज़्यादा हंग्री होते हैं. वो फूड खाने के लिए कुछ ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि वो हंग्री होते हैं. So the answer is you have to write neat and clean writing and make a one finger distance between two words. Okay. He is looking for some
food. 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 Because क्योंकि he is hungry. He is looking for some food. वो कुछ खाना ढूंढ रहा था, देख रहा था. Because he is hungry. क्योंकि वो भूखा था. Because he was, not is. ये हमारी mistake है, तो we use eraser for erasers. He was because he was hungry. क्योंकि वो भूखा था. Question number 2. He was looking for some food. Question number 2. How long does Mr. Mouse wait for food? For food. How long does Mr. Mouse wait for food? Mr. Mouse कितने टाइम तक वो भूखे रहे, उन्होंने फूड का खाने का इंतजार किया. हमने लेसन में रीड किया था कि जो है Mr. Mouse wait for food. डेज नहीं, वीक्स भी गुजर गए थे, डेज भी गुजर गए थे, 1 मंथ हो गया था. आपको याद होगा कि 1 मंथ हो गया था कि मिस्टर माउस को कुछ खाने को नहीं मिला था. आफ्टर 1 मंथ उनको बास्केट ऑफ कॉर्न नजर आई थी, जो उन्होंने फिर वो ईट करी थी. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मिस्टर माउस वेट फॉर फूड. Wait for food since a month. Since a month. Mr. Mouse wait for food since a month. Mr. Mouse ने फूड का कब तक वेट किया? मंथ तक. पूरा 1 महीना, पूरा 1 मंथ वो भूखे रहे. आफ्टर 1 मंथ उन्होंने फिर बास्केट ऑफ कॉर्न देखी और उसके होल में घुस गए और फिर उन्होंने वो ईट की. क्वेश्चन नंबर 3. अब देखें, हमारे पास यहाँ पे जगह नहीं है. We have only 1 line, so we use new page. First, write down the date. Before starting every word, you have to write down the date. NCW letters. And write the question number 3. What does question number 3? What does Mr. Mouse find? What does Mr. Mouse find? Mr. Mouse ने क्या ढूंढा? After 1 month, मैंने आपको बताया था कि after 1 month उन्होंने क्या find किया? Yes, a basket of corn. Mr. Mouse find a Mr. Mouse find a basket
of corn. इन्होंने basket of corn find करी with a thick cloth on top. On top. Mr. Mouse find a basket of corn with a thick cloth on top. Mr. Mouse ने basket of corn को ढूंढा, find किया और जिस corn के ऊपर क्या था? Thick cloth of top. उसके ऊपर एक मोटा कपड़ा डला हुआ था उस basket के ऊपर. हमने पिक्चर में देखा था आपकी बुक में कि उसके ऊपर रेड कलर का एक थिक क्लॉथ रखा हुआ था जिसके ढका हुआ था कि ताकि कोई भी एनिमल कोई इसके अंदर एंटर ना हो सके. बट उस बास्केट के अंदर एक होल था जिसकी हेल्प से वो मिस्टर माउस एंटर हो गए. क्वेश्चन नंबर 4. Why did Mr. Red tell Mr. Mouse to become thin? To become thin. Mr. Red, why did Mr. Red tell Mr. Mouse to become thin? Mr. Red ने Mr. Mouse को क्यों कहा क्या तुम आप जो है वापस से thin हो जाए मतलब दुबले हो जाए? Because he eats and eats and he is not thin now. And he is not thin now. Because he eats and he is not thin now. क्योंकि वो खाए जा रहे थे और वो अब दुबले नहीं रहे थे. मिस्टर माउस उस होल में से कैसे एंटर हुए थे? क्योंकि वो तो छोटा था. मिस्टर माउस क्योंकि बहुत ज्यादा भूखे थे और वो बहुत ज्यादा वीक हो गए थे, बहुत ज्यादा थिन हो गए थे, वो इजीली उस होल में से एंटर हो गए. जब इन्होंने बहुत सारा खा लिए कॉर्न, बहुत सारा खा लिया, पेट भर लिया, फिर उसके बाद जब वो उस होल से निकलने की कोशिश करने लगे, जब इन्होंने ज्यादा खा लिया तो फैट हो गए, थिक हो गए. और फिर जब वो उस होल से निकलने की ट्राई करने लगे उस होल से निकलने के लिए तो वो निकल नहीं पा रहे थे क्योंकि वो तो बहुत छोटा सा होल था, वो थिन थे तो इसलिए एंटर हो गए. तो मिस्टर रेड कहते हैं आप पहले थिन हो जाए फिर आप इस होल से बाहर निकल सकते हैं. So students, our question answer is completed. There are only 4 question answers in this lesson which we have done. Now come to fill in the blanks. Open new page. Write date here. NCW. And write down the heading of fill in the blanks. Fill in the blanks. Number 1. Mr. Mouse is dash. Mr. Mouse क्या थे? बहुत ज़्यादा
भूखे थे तो भूखे hungry. Mr. Mouse is hungry. Number 2, he sees a basket of dash. Of dash. He sees a basket of dash. Mr. Mouse ने किस चीज की basket देखी थी? Flower basket. He sees a basket of flower. No. He sees a basket of fruit. No. He sees a basket of corn. उन्होंने corn की basket देखी थी. C-O-R-N, corn. Number 3. There is a dash in the basket. In the basket. There is a dash in the basket. बास्केट में क्या हुआ हुआ था? बास्केट में एक छोटा सा होल था. There is a hole in the basket. H-O-L-E, hole. There is a hole in the basket. So, number 1, Mr. Mouse is dash hungry. He sees a basket of corn. There is the hole in the basket. So students, you have to do this work with neat and clean writing, and don't forget to make a one finger space between two words. Now, come to next one, true, false. Write the heading, true, false. Number 1. Number 1 is Mr. Mouse wants some clothes. Mr. Mouse wants some clothes. Mr. Mouse को कुछ कपड़े चाहिए थे. Is it right? Mr. Mouse को कपड़े चाहिए थे या वो hungry तो उनको food चाहिए था? Yes, this is false. Mr. Mouse wants some food. यहाँ पे clothes लिखा है, food तो नहीं डिवाइड हुआ हुआ, तो हम यहाँ पे false लिखेंगे क्योंकि उनको कपड़ों की जरूरत नहीं थी, उन्हें food की जरूरत थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा hungry थे. Number 2. He sees a basket of corn. He sees a basket of corn. He sees a basket of corn. उन्होंने कौन सी basket देखी? corn की. Is it true or false? Yes, true. क्योंकि वहां पे तो corn की ही basket थी with a thick cloth on the top of the basket. Number 3. Mr. Mouse eats the sweets. Is it true or false? Mr. Mouse eats the sweets. उन्होंने क्या कुछ sweets खाई थी? No, उन्होंने basket of corn से corn खाए थे. So is it true or false? Yes, false. So students, this is enough for today. अब ये हमारे जो work है ये ओके है, enough है हमारे आज के दिन के लिए. What we done today? Today we did question answers,
1, 2, 3, 4 questions answers, and we did fill in the blanks, 3 fill in the blanks and 3 true false. You have to write this in your copy with neat and clean writing like a teacher, and don't forget to mention the date on the top of the page. And then after the complete your work you have to check कि आपने कोई मिस्टेक तो नहीं करी। फिर उस मिस्टेक अगर आपकी कोई आ जाती है तो आप उसको इरेज करके करेक्शन करेंगे। देन जब हमारा ग्रुप ऑन होगा तो आप उसमें हमें सेंड करेंगे। देन टीचर आपकी कॉपी चेक करेंगे इंशाल्लाह। सो स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह we will meet you soon in our next video. अल्लाह हाफिज़, stay home, stay safe. अल्लाह हाफिज़।